protect civilians and civilian infrastructure, and allow unimpeded access. There should be zero tolerance for policies of starvation, siege, and the targeting of medical care. Accountability must be reinforced, and prevention must be integral to our efforts, not just an afterthought. Third, we must make the humanitarian system fit for purpose through the envisaged humanitarian reset and a compact shaped by ownership of member states. These must not be technocratic exercises. Member states must be involved in shaping priorities, governance, oversight, and financing. The reset should deliver a system that is more efficient, flexible, predictable, and strengthens surge capacity, simplify coordination and accountability. Fourth, expand and diversify financing, because the current model is not sustainable. Predictable multi-year funding and fair burden sharing are essential. Pooled funds, including Central Emergency Response Fund, must be expanded, and innovative financing such as debt swaps should complement traditional donor support. Every dollar we invest in prevention saves many more in response. Fifth, invest in resilience and reduce dependence on aid. Millions of people should not rely on humanitarian assistance every year, in fact, year after. Strong national systems, shock responsive, social protection, disaster risk reduction, and early warning must be scaled up. Climate change obligations, particularly the commitment to triple the adaptation finance by 2035, must be fulfilled through the provision of new, additional, predictable, and grant-based climate finance. And the transition from relief to development must become a reality. Finally, put people at the center. Humanitarian action must protect dignity and rights. Women, children, persons with disabilities, and the displaced face disproportionate risks. Their protection and inclusion must be integral to our work. Similarly, humanitarian personnel who face the greatest danger must be supported and safeguarded. Madam President, the 80th anniversary of the United Nations calls for deep reflection. We cannot accept a future where humanitarian appeals double, but where conflicts remain unresolved and where climate crises overwhelm communities. Let us reimagine humanitarian assistance by renewing solidarity, strengthening multilateral cooperation, upholding international law, and building a humanitarian system that meets the urgent needs of today while reducing the needs for tomorrow. I thank you. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब आपने मुलाहिज़ा किया। उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन असरात ख़ित्ते में पड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान फिर दहशत गर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। तकरीबन 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल TTP अफ़गानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आसिम इफ्तिखार का खिताब अभी कुछ ही देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा में जारी था, जिन पर उसका कहना था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन असरात ख़ित्ते में पड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान फिर दहशत गर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। तकरीबन 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल TTP अफ़गानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब जारी था। उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन असरात ख़ित्ते में पड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान फिर दहशत गर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तकरीबन 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल TTP अफ़गानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। हमारी बहादुर फोर्सेस और आम शहरियों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसा कहना है आसिम इफ्तिखार का। वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। और अफ़गानिस्तान फिर दहशत गर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। तकरीबन 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल TTP अफ़गानिस्तान में मौजूद है। They do under pressing circumstances.
We also thank USG Tom Fletcher for his insightful briefing on the humanitarian situation, and also to civil society briefer Ms. Nari for her remarks. Madam President, it has been more than 4 years since the Taliban takeover that ended the civil war and offered a glimmer of hope for Afghanistan, though not without serious apprehensions and doubts. In the spirit of good neighborliness and our long-standing commitment and interest in a peaceful and stable Afghanistan, Pakistan engaged with the Taliban authorities regularly and throughout this period. Just this year, we conducted a series of high-level visits to Afghanistan and launched a number of initiatives, supported humanitarian relief efforts, facilitated transportation of goods, and announced trade and transit concessions. And we have also remained engaged with various regional processes on Afghanistan. It is important to recall that there were several expectations of the international community from the Taliban based on their own commitments, in particular not to allow the use of Afghan soil for terrorism against any country. And many colleagues around the table have referred to that. Unfortunately, initial अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब जारी था। आसिम इफ्तिखार का कहना है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन असरात ख़ित्ते में पड़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान फिर दहशत गर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। तकरीबन 6000 जंगजुओं पर मुश्तमिल TTP अफ़गानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। हमारी बहादुर फोर्सेस और आम शहरियों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं।